Hello, I am Arun ji, a translator from India, a literary translator. I translate short stories, poems from English to Hindi, and also from Hindi to English. I am thankful to Translators Aloud that has allowed me to recite a poem on this platform. The poem that I have selected is from Deaf Republic by Ilya Kaminsky, a well-known Ukrainian-American poet. Deaf Republic is the second poetry collection by Ilya Kaminsky. This is the book, Deaf Republic. Deaf Republic tells the story of a cruel military rule that tortures its citizens. The citizens also protest, they revolt, but they suffer a lot and they give up and surrender. The poem that I have selected from the book is entitled as Gunshot. This is the poem with which the story of Deaf Republic begins. So I'm going to recite the poem first in English and then in Hindi. So, Gunshot. Our country is the stage when soldiers march into town. Public assemblies are officially prohibited. But today, neighbors flock to the piano music from Sonia and Alfonso's puppet show in Central Square. Some of us have climbed up into trees. Others hide behind benches and telegraph poles. When Petya, the deaf boy in the front row, sneezes, the sergeant puppet collapses, shrieking. He stands up again, snorts, shakes his fist at the laughing audience. An army jeep swerves into the square, disgorging its own sergeant. Disperse immediately. Disperse immediately, the puppet mimics in a wooden falsetto. Everyone freezes except Petya, who keeps giggling. Someone claps a hand over his mouth. The sergeant turns towards the boy, raising his finger. You. The puppet raises a finger. Sonia watches her puppet. The puppet watches the sergeant. The sergeant watches Sonia and Alfonso. But the rest of us watch Petya lean back, gather all the spit in his throat, and launch it at the sergeant. The sound we do not hear lifts the gulls off the water. So this was the one in English, the original one by Ilya Kaminsky. And here I am going to recite the one which I have translated into Hindi. The title is गोलीबारी. रंगमंच है हमारा ये देश. यहाँ सैनिक जब शहर में करते हैं प्रवेश, लोगों के जमा होने पर तब लगता है निषेध. पर आज शहर के मुख्य चौक पर जब बजती है सोनिया और अल्फांसो की थिरकती कठपुतलियों की धुन, उनके मधुर संगीत को सुन पड़ोसी सब निकल पड़ते हैं. हम में से कुछ तो पेड़ पर चढ़ते हैं और कुछ टेलीफोन के खंभों और बेंचों के पीछे छुपकर झांकने लगते हैं. आगे की पंक्ति में बैठा एक बधिर लड़का पेट्या
जोर से छींकता है और एक नन्ही कठपुतली चीखती हुई गिर पड़ती है। फिर तुरंत उठकर वो फुफकारती है और जोर जोर से हंस रहे दर्शकों की ओर अपना मुक्का दिखाती है। तभी एक आर्मी की जीप अचानक चौक पर आकर रुकती है। जीप से एक हवलदार उतरकर अपनी कड़क आवाज में चिल्लाता है, हरो सब, भागो यहाँ से। नन्ही कठपुतली नकल करती है अपनी पतली आवाज को नाक से निकालकर, हटो सब, भागो यहाँ से। सुनकर हो जाते हैं हम सब स्तब्ध, पर पेटिया खीखी करके हंसने लगता है। उसके मुंह पर कोई उंगली रखता है, पर तभी हवलदार उसकी ओर उंगली उठाकर चिल्लाता है, तुम। नन्ही कठपुतली भी अपनी महीन आवाज में उसकी नकल उतारती है। सोनिया अपनी कठपुतली को देखती है, कठपुतली हवलदार को, और हवलदार सोनिया और अल्फांसो को। हम सब देखते हैं पेटिया को, जो थोड़ा पीछे झुककर अपने मुंह में थूक भरकर हवलदार के मुंह पर जोर से दे मारता है। हम उस आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, जिसे सुनकर पास के तालाब से बगुले फड़फड़ा कर उड़ जाते हैं। थैंक यू।